Okay, now this vector A has a component in the x direction, which you can see here. This is the y component. Similarly for B, this is the x component and this is the y component. So when you wish to find out the component of the resultant of A and B, that is A plus B, then what you can do is you can add the x component separately and the y component separately. आ रही बात समझ में? It will automatically take care of all possibilities. Let us say B is inclined at an angle more than 90 degree. तो आपका एंगल कितना है? 117.9 है वेक्टर ए एंड बी के बीच में. रिजल्टेंट के बीच में कितना है वो सब दे रखा है, ठीक है ना. नाउ द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए इज पॉजिटिव बट द एक्स कंपोनेंट ऑफ बी इज नेगेटिव. दिख रहा है? So that is why the x component of resultant is only this much, which is ax minus this value. अगर इसको मैं चेंज करके इधर ले आता हूँ, उल्टा ले आता हूँ, तो it will automatically take care of it. So adding vectors in their rectangular component form always works. Either you can add a with v, ठीक है. Now the same thing you can see in the form of projections on the x-axis and y-axis. Yes. These are individual components. The magnitudes are also shown here. So what I will do is I will share the link of this thing. You can try at home to practice more. ठीक है. I do not know, मैंने last time share किया था आपके साथ. Yes, sir. किया था. Yes, sir. Okay. अब देखिए इसमें अब हम लोग 3 डायमेंशनल में चलते हैं. दिख रहा है ये? What is S? Can somebody tell me what is S here? Vector. Vector subtraction. Vector subtraction है ये. Okay, now this is vector sum. हाँ सक्षम बोलो बेटा. Sir, the image you have sent is not opening, but the PDF is opening. So, are they both same? No. That image was just to tell you that it is available in PDF format in the chat box. Okay. No need for image to download. I only Okay, think sir. you have PDF. अब देखो. Okay, sir. अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ. अगर मैं A को चेंज करता हूँ और B को अकॉर्डिंगली चेंज करता हूँ, मैं B को उसके हेड पे रख देता हूँ, तो मेरा सम एंड डिफरेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है. ठीक है ना. अब लेट अस से ये सेम वेक्टर मैं यहाँ पे एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ.
what is this? Sum of three vectors. Okay, what is the resultant? This is the resultant. अब अगर मैं एक और वेक्टर लेके आ जाऊं, this is the fourth vector now, like this. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? What this triangle represents? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Polygon sum of vector, the polygonal law. Yeah, of polygon addition. The Yes. polygon law of vector addition. हाँ, आ गया सबको समझ में क्या कर रहे हैं हम लोग? तो ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट करना है और देखना है फिर, ठीक है? तो इसको आप ट्राई करना, आपको क्लैरिटी आती जाएगी. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द शीट. यस रुशांक, बताओ कैसे करोगे बेटा? Dot product of two vectors is 0 when they are mutually perpendicular. Okay, sir. Okay, thank you. So if you do the dot product of this, 2 into 4 is 8, then 3 into minus 4 is minus 12, plus 8 alpha. Okay, again 2 into 4 is 8, 3 into minus 4 is minus 12, plus 8 alpha should be 0. Is this clear? So this will be alpha will be equal to 1 by 2. This is question number 1. किसी को डाउट है इसमें? Dhanraj, do you want to explain this? Yes, sir. बोलो. Sir, we know that these two vectors are parallel. So for them to be parallel, the ratio of each of their components will be same. Now, if we will take the ratio, we'll get the answer as 2. Yes. Good. So basically, if these two vectors are parallel or anti-parallel, okay. So when a question comes of two vectors being parallel, you must also think in terms of it being anti-parallel. तो अगर मैं इसको वेक्टर A को, let's say this is vector A,
and this is vector B. So A vector और B vector को अगर मैं compare करना चाहता हूँ, so it will be some k times A, where k is some positive or negative scalar value. Yes or no? So what is B? Minus 4 I cap minus 6 j cap minus lambda k cap. This should be equal to k times 2 I cap plus 3 j cap minus k cap. So if you compare the I components, j component and k component, it has to be equal. If the two vectors are parallel or anti-parallel, so 2k is minus 4, 3k is minus 6. From these two first equations, you are getting the value of k is minus 2. Okay. Now don't confuse this k with this thing. So let's say I will replace this with m. Where m is minus 2. So based on that, now you can write minus m is equal to minus lambda. Okay, so what is lambda? M, that is minus 2. Yeah, so 100 joule will be the answer. I do not know. You have to solve. Yes, sir. Okay. चलिए next problem पे. Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर्स दिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे जो 0 के इक्वल होगा. तो सर जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, देयरफॉर रेशियो विल बी इक्वल टू 1. Yes, very good. So let's say a plus b और a dot b का a minus b का डॉट प्रोडक्ट मैं लूंगा. ठीक है. So this is also a vector, resultant of a plus b and the difference of a minus b. These are what? Vectors only. तो जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लूंगा और अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं दोनों वेक्टर, तो इट शुड कम आउट टू बी 0. अब जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? a डॉट a प्लस a डॉट माइनस b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट माइनस b. ये 0 के बराबर आना चाहिए. Now you can see that a dot a will be a square. This will be minus ab cos theta. This will be ab cos theta, and this will be b square equal to 0. Sorry, this is minus. Sir, minus b square. Yes, this is minus b square.